Good evening and welcome. You're watching Breaking Views with me, Sanket Upadhyay, the show where we get you all the views so that you get the complete picture. Now, as far as the Revdi debate is concerned, Revdi is a sweet. It originates from Lucknow. The Lucknow ki Revdi is very famous, and trust me, it does not come for free. You have to pay for it. But in the political context, Revdi has now become synonymous with freebies, political freebies. And the Prime Minister mentioned this word in the Bundelkhand rally. And then there was a reaction as to look who's talking. But now this matter has reached the Supreme Court. There is an anti-freebie PIL which was filed by a BJP leader. And the Supreme Court has taken cognizance and directed center. What has the Supreme Court said? Let's quickly tell you that. The Supreme Court has directed the center to respond on a plea to stop freebies. The Supreme Court has asked the center, why are you hesitating in taking a stand? The PIL has been filed by a BJP leader. It wants deregistration of political parties who are announcing freebies. The petitioner says, Sri Lanka also kept giving freebies like this. We are headed that way. The center then says that this is the poll panel's domain. Election Commission says we cannot control freebies. The center can argue the matter better, and the hearing is going to take place next week. That is what has happened in the court. But you see, there is a very fundamental point that we need to touch upon here. What we call freebies can also be called welfare schemes. After all, India is a welfare state. Where is the definition that X is a freebie or a SOP and Y is a welfare scheme? Who distinguishes between these two? Let me give you some examples. Akhilesh Yadav in January said that there will be free laptops for UP students. And he distributed also when Akhilesh Yadav was the chief minister. Akhilesh Yadav also promised free electricity earlier. Now the thing is that education for all and electricity for all have been poll promises. They're directly linked to development, which leads to the economic cycle turning. So then, is it a welfare scheme or is this a freebie? Cut to the BJP. Amit Shah in February said that free gas cylinders will be given to UP households. The Prime Minister himself hailing the free ration scheme and mentioning it over and over and over again in election speeches. Is that a welfare scheme or a freebie? The Goa government last week said that there will be free laptops for SC and ST students. Again, freebie or welfare scheme? The Aam Aadmi Party in Gujarat says, and it has promised, that there will be free electricity up to 300 units. Between 2013 and 2017, the Odisha government distributed over 59,000 phones. Again, we ask this very fundamental question. Who defines what is a freebie and what is a welfare scheme? The line is very thin. How do you differentiate? And when you decide that no to Revdi politics, to a question that has been asked by the Supreme Court, yes, there is a financial implication. But then, this definition is very unclear. It lands in the political domain. Who answers this question? Because everyone, if this is Revdi, then every political party in this country is used to giving Revdi and is used to mentioning this in elections. So where does the change begin, and whatever happens then to welfare schemes? Let me now introduce our guests. Aman Pawar, National Spokesperson of the Congress Party, Lalita Kumaramangalam, member of the BJP, and Reena Gupta, spokesperson of the Aam Aadmi Party. Who defines what is Revdi or not? And if we continue with welfare schemes, what are the ways to ensure that this is not a drain on our resources? Because it is a fact and it is the truth that if you endlessly keep on promising things which you know that financially you cannot deliver, Mr. Aman Pawar, the country will go bankrupt. And that is something which no patriot would want. So Aman Pawar, how do you approach this debate? Mr. Pawar, if you could unmute yourself, please.
I still cannot hear you, Mr. Pawar. you I'm hear going to me come now? back to you while you fix that. Lalita Kumaramangala. Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. Please go ahead. Yes. So, Sanket, I must tell you that the same question arose before the Supreme Court even in the year 2013, and the Supreme Court in the matter of S. Subramaniam versus State of Tamil Nadu had asked the Election Commission of India that when political parties make pre-poll promises, are they allowed to go to any extent, or is there going to be any bar? And I must tell you that I had the privilege at that point of time to represent the stand of the Congress party with other two senior leaders. And we relied upon Article 282 of the Constitution. So Article 282 of the Constitution very clearly says that a government which is in power can make allocation for any subject, whether it is under the legislative domain of the government or not. So we told the Election Commission that as a political party, it is our right that through our manifesto, we tell the people, we tell the voters that what is that we plan for them if we come to power. And it could be under the ambit of, promising free electricity, free transport. It could be, waiver of some type of property tax, etc. Now, this was at large deliberated before the Election Commission of India in the year 2013 itself in an all-party meeting. And the Election Commission at that point of time submitted an affidavit before the Supreme Court that Article 282 gives wide powers to make these promises. However, it is very important that the political party which makes these promises must adhere to these promises once they come into power. Okay. However, what we are seeing now is that the kind of promises made by the BJP, and I would like to say that be it, the slogan, "Bahut hui mehengai ki maat," we see how the price rises rocketing up. We have seen the kind of promises made by the Prime Minister himself that he will deposit 15 lakh rupees in account of every voter once he comes to power. Sure. Okay. I think I've got the point that you're making. Lalita Kumaramangala, I want to come to you now. You see, it is theoretically and even practically, yes, you have to take care of your country's finances, and thus you cannot make a promise which you cannot deliver, right? Financially, if it is not viable. But the point is that who decides what is a freebie and what is a welfare scheme? For instance, I'm telling you, free electricity, because that was the that was the point that was being made, would lead to savings in poor families, would lead to them spending greater on their welfare, buying more goods, may lead to the cycle of the economy turning. And that is true for every welfare scheme, to empower people. Free laptops, empowering people. Giving 1 lakh rupees to a woman who has gotten married. Again, empowerment. Who decides this? What is revdi and what is not? Lalita Kumaramangala. Yeah. Hi, Sanket. Actually, I am not here to speak on behalf of the BJP today. Let me make this very clear. Most of what I'm going to say is what my personal opinion is. I was initially educated as an economist, and then I did an MBA. So I understand the financial problems that will not could arise with the sort of slew of freebies that are being offered, unfortunately, by every party today. We've seen what happened in Venezuela. We've seen what happened just recently in Sri Lanka, and many other, even European countries are now struggling under lots of debt, etc., and finding it very difficult to make ends meet. Now, the point here is exactly what you said, that who is to decide what is a freebie and what is a welfare measure? If you ask any party that is offering freebies across the board, they will tell you that we are doing it so that we can uplift the downtrodden or the marginalized, whatever word you want to use. But the point also is that there has to be a limit. Now, I wish the Supreme Court had asked all the political parties this, not just the BJP, because in every state you see, and I come from the state of Tamil Nadu, where we are the freebie kings, if you ask me. We've just had property taxes hiked by nearly 150%. It has been announced that electricity charges are going to more than double, nearly triple.
and the DISCOMs, that is the power distribution companies, are owed over 3,600 crores by the Tamil Nadu government. Nobody has any idea if the increased prices we are going to pay, those who are going to pay and can afford to pay, will be enough to help the Tamil Nadu, or will the Tamil Nadu government use that money to actually boost up the power sector and make sure that power is available more cheaply for those who need it at lower prices? Or if they're going to come in with a differential price system which will actually help and can be sustained. The point is not that whether you're helping somebody for a short period of time, but whether that freebie, revedi, whatever name you want to give it, these are just terms, can be sustained. It's the sustainability of these things that becomes such a big problem, and I think has got the Supreme Court very, very worried. Okay. Now, the person who has actually filed that case in Supreme Court is a good friend. And I agree with he's going to join us in just a short moment on the show. That there has to be a limit to this. And the problem is, who is going to bell the cat is what nobody seems to know. So Everybody here is the busy, thing. You know, want the finding Supreme fault Court with to each bell other. the cat, because No, otherwise I am not every saying the political Supreme party Court- will keep on doing I it. don't think the Supreme Court will be allowed to bell the cat, quite frankly, Sanket. It is the political parties who must have the common sense. But then this is a long-term vision. You can't, every time do it. Okay, Reena Gupta. Every time, you have elections. Sure, Reena Gupta, I want to come to you now. You see, the Aam Aadmi Party is often criticized. No, just one more point. Very quickly, I ma'am. also find fault with the Indians themselves. Why do we vote for those freebies? Have we become such beggars that, you win an election if you offer computers? I understand. Free electricity to a certain section of people also can be. But everybody just goes blindly and says, hame bijli mil raha hai, itna pani mil raha hai, itna vagera, vagera, why we are going to vote for that party. What is wrong with us as voters also? So I'd like to say that everybody needs to take a step back and look at it very... but my point is that my point is what is going to happen is that then every welfare scheme could fall in the definition of freebies. For instance, this Labharthi scheme or the free ration could also fall in the category of freebies. Look, but it was used to win elections. And in election after election it was used. Reena Gupta, I want to come to you now. BJP as a party was known for freebies, but now, Reena Gupta, I want to come to you now. You see, when Revedi comment was made, the inference was towards the Aam Aadmi Party, and we saw a reaction also from the Aam Aadmi Party. And your party is repeatedly making these claims in state after state. Now, very recently in Gujarat. How do you approach this freebie versus welfare debate? Do you feel a much better thing to do will be to increase revenue? I mean, continue with welfare schemes, but increase your revenue so that you can fund these schemes. Because it is true, you can't endlessly fund these welfare schemes. There has to be a way to be able to pay for it. So, Sanket, every government in this country, whether it's the state government or the central government, raises revenue through taxes and then uses the tax money to provide some schemes, welfare measures to its citizens. Now, what Aam Aadmi Party has done is, when we were elected in Delhi, the budget of Delhi was 30,000 crores. In 7 years, the budget of Delhi has become 78,000 crores. How has this happened? We have leaked all the corruption in Delhi. And we have stopped the raid Raj of Inspector Raj and raid Raj. So the traders of Delhi are happily paying the taxes that they are supposed to pay. Whereas on the other hand, if you see, since the time the Bharatiya Janata Party government center has come to power in the center, they have written off 11 lakh crores of NPAs. These are loans given to their crony capitalists. So that is one model where what you do is you're writing off loans, bad loans, which should have not been given in the first place. They were given only because of political patronage. On the other hand, you have a government of Aam Aadmi Party in Delhi, which is managing its finances really well, which has increased its revenues, and it's using but that Reena Gupta, you see, Delhi is not the only model. Here you have a state like Punjab also, which is reeling in debt. Yes, Sanket. We have inherited a very bad condition of budget in Punjab. Sanket, it's hardly been a few months. Give us some more time, and I'm very, very sure that we'll manage the finances in Punjab also very well. And Punjab will soon become a surplus state, and everything that we have promised in our manifesto will be delivered to the people of Punjab. But Sanket, the point that I'm trying to make is that, this is defined in our constitution. It's a socialist country.
We have to make sure that every citizen of this country has access to basic necessities of life. Good quality healthcare, good quality education, drinking water, electricity, these are all basic necessities. Are we changing the basic character of the country? Is that the point that you're making? That no, I'm not. We would want to cease to exist as a socialist republic. No, we should continue to exist as a socialist republic. What I'm saying is that none of the governments till now have actually acted on that idea of socialism. That's the reason you see Aman that Pawar. inequality. Aman Pawar's quick response. Sanket, let me complete. That is the reason Sanket, you see as far as inequality in India is only going up. Okay, fine. I got your point, Reena ji. Yeah, Aman Pawar, very quickly, last 1 minute. Yes, as far as she said that she's managing the finances of Delhi very well, I am sure they are, because they have increased the ad budget from 27 crores to 540 crores under Arvind Kejriwal's government. 27 crores when Sheila Dikshit was chief minister, 540 crores is what they are spending now. And if the financial condition of Delhi is so good, I want to ask, why is Arvind Kejriwal complaining every second day that they are not getting the funds from the center, and that's why they are not able to work for the people of Delhi? I mean, this Who's is a saying very you're not able to work for the people of Delhi? The people of Delhi are saying that we are working for the people of Delhi. And also, I don't need your certificate. Sanket, the CAG has said very clearly. We have seen Delhi the is the kind only of corruption. state which is managing its finances is well. inside, their minister Corruption is what we inside. saw under your Okay, government. one by one, please. I think I did not disturb her when she was talking. One by one, please. Their own minister. Sanket, I did not get enough time to respond. Okay, their own minister, very quickly, Satendra Mr. Jain, Pawar, is please inside finish. for I'm running out of corruption time. charges. There is a liquor policy scam under the nose of this government. These are very my shocking and problem is that appalling I have things. limited time, and if we get into each of these aspects, it will be very, very difficult for me to Sanket, to ensure fairness. Sanket, I just want to make one point. And conduct the debate. Reena Gupta, very quickly, running out of time. Sanket, the CAG in its reports has repeatedly said that the Delhi government is managing its finances very well. I don't need a certificate from Congress or BJP. The CAG of this country has given us a certificate. Freebie versus welfare requires a much more intelligent approach than you also do, because everybody does. We all know that the BJP is no different from AAP, is no different from the Congress party. The point is, how do you fix the finances and at the same time continue to live up to your responsibility of being a welfare state? I think that's the most important point. Lalita Kumaramangalam, Reena Gupta, as well as I think first of Mr. all, we yeah, need so, to yes, stop sorry, finding fault Ms. with each Kumaramangalam. other and work together. First of all, maybe it sounds a little too, optimistic. We need to stop taking pot shots at each other and behaving like we are holier than everybody else. And we have to sit together to do it, Sanket, because this is where actual consensus needs to take place. Okay. If one party breaks the rank, that's it. Everybody will follow suit. Because, like I said, Indians seem to vote where they get freebies. Exactly. So it's not only the fault of the political parties. So political responsibility is required from everyone. Political responsibility from everybody, including Fine. our voters. Okay, thank you very much to the three of you. Thank you very much for joining us on this broadcast. I have with me the petitioner in this case, Mr. Ashwini Upadhyay. अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं वो ये है कि ये आपको क्यों ज़रूरत महसूस पड़ी है इस तरीके की एक पिटिशन फाइल करने की? अब उस पर हमने देखा है, जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से, लेकिन इसमें जो बड़ा सवाल ये पूछा जाएगा कि सारे राजनीतिक दल यही कर रहे हैं, यहाँ तक कि जिस पार्टी से आप संबंध रखते हैं वो भी यही करती है। देखिए, पहली बात तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, सारे राजनीतिक दल ये काम करते हैं। जिस पार्टी से मैं संबंध रखता हूं वो भी ये पार्टी करती है, लेकिन एक हमारी पार्टी में इतनी लिबर्टी है कि पार्टी का कार्यकर्ता बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पीआईएल फाइल कर सकता है। किसी और पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता ने पीआईएल फाइल नहीं किया, तो इसका मतलब हमारी पार्टी में बहुत डेमोक्रेसी है, इतनी लिबर्टी है कि जहां राष्ट्रीय की बात हो, समाज की बात हो। मोदी जी ने जो बुंदेलखंड की रैली में उन्होंने जो बोला रेवड़ी कल्चर, उसके बाद अश्विनी जी को आइडिया आया चलो एक पिटीशन फाइल करें। नहीं संकेत जी, आप फैक्ट ठीक कर लीजिए। मोदी जी ने अभी 10-15 दिन पहले बोला है ये पीआईएल मैंने जनवरी में फाइल किया था और 25 जनवरी को इस पर नोटिस इशू हो गया था। ये 6-7 महीने पुरानी बात है। देखिए, मैंने फाइल क्यों किया आपको बताता हूँ।
जब आपको याद होगा ये यूपी का चुनाव और पंजाब का चुनाव, ये 6 राज्यों का चुनाव चल रहा था, तो लगातार एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टियां अपने वादे कर रही थी। किसी ने बोला हम आपको सब जितनी महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपए देंगे, किसी ने बोला पेंशन देंगे, किसी ने बोला मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे, फिर किसी ने कहा मैं तो स्कूटी दे दूंगा। यूपी में तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने बकायदा स्कूटी का वादा कर दिया था। तो फिर मुझे लगा कि एक बार इस पर थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च करने के बाद मुझे संकेत जी पता चला कि भारत के टोटल जो स्टेट्स हैं, राज्यों के ऊपर 70 लाख करोड़ का कर्जा है। जैसे यूपी के ऊपर 6.5 लाख करोड़ का कर्जा, पंजाब के ऊपर 3.25 लाख करोड़ का कर्जा, दिल्ली के ऊपर 50,000 करोड़ का कर्जा, महाराष्ट्र पे 6 लाख करोड़ का कर्जा, तमिलनाडु पे 6 लाख करोड़ का कर्जा, आंध्रा तेलंगाना पे 3-3 लाख करोड़ का कर्जा, बिहार पे 3 लाख करोड़ का कर्जा, बंगाल पे 4 लाख करोड़ का कर्जा, राजस्थान पे 3 लाख करोड़। तो मतलब 70 लाख करोड़ का कर्जा, पैसा हमारे पास है नहीं। हाईवे बनाने के लिए बाहर से उधार लेना पड़ रहा है, मेट्रो बनाने के लिए बाहर से उधार लेना पड़ रहा है, कहीं वर्ल्ड बैंक से लेना पड़ता है, कहीं जापान से लेना पड़ता है। अश्विनी जी आपकी बात, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बाहर से उधार लेते। अश्विनी जी देखिए, इन प्रिंसिपल आपकी बात में कुछ गलत नहीं है। अश्विनी जी, इन प्रिंसिपल आपकी बात में कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हाउ डू यू डिफाइन कि रेवड़ी क्या है और कल्याणकारी नीति क्या है? व्हाट इज वेलफेयर एंड व्हाट इज रेवड़ी, व्हाट इज अ फ्रीबी? हाउ डू यू डिफाइन दिस? जैसे कि अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ दूं, क्या आप इस बात का जवाब दे पाएंगे? लड़कियों के लिए साइकिल, ये रेवड़ी है कि फ्रीबी है या वेलफेयर स्कीम है? बाइसिकल्स फॉर गर्ल स्टूडेंट्स, गैस सिलेंडर्स फॉर विमेन, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, 1 लाख रुपए जो महिला को शादी पर मिलता है वो, अब इसको आप रेवड़ी बुलाएंगे या इसको आप वेलफेयर स्कीम बुलाएंगे? और इन दोनों में फर्क क्या है फिर? ये कौन तय करेगा? हाँ, फर्क ये है, फर्क आपको बता रहा हूं। देखिए, इस देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने घर से पैसा लगाती नहीं, कोई नेता अपने घर से लगाता नहीं। अल्टीमेटली पैसा किसका है? पब्लिक का, टैक्स पेयर का। तो पब्लिक का पैसा पॉलिटिकल पार्टियों को राइट नहीं है खर्च करने का, गवर्नमेंट को राइट है। गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी में अंतर होता है। एक आप सरकार आ जाते हैं, सरकार के बाद आप व्हाइट पेपर अपना पेश करिए असेंबली। चलिए, ये डिफरेंस मैं आपकी समझ गया अश्विनी जी। आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट स्पेंड, द गवर्नमेंट शुड स्पेंड, एंड व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स इट इज वेलफेयर स्कीम। अब यहां पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अगर हम मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, तो हम बतौर सरकार दे रहे हैं। इसमें गलत क्या है? क्योंकि मोदी जी जब उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन बांटा जाता है, लाभार्थी का जिक्र होता है और उसके चलते चुनाव जीता जाता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सही और ये गलत? हाँ संकेत जी, 2 मिनट मुझे उसका दीजिए, मैं आपको उत्तर देता हूं। आपने गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया, गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद आपको यह पता चल गया कि आपके पास पैसा कितना है। पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव के पहले तो पता ही नहीं होता कि उस राज्य का, मान लीजिए पंजाब का चुनाव ले लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए, यूपी का ले लीजिए, बिहार XYZ किसी आप एग्जांपल ले लीजिए। पॉलिटिकल पार्टी को यही नहीं पता कि जब सरकार बनाएंगे तो हमारे राज्य पे कितना कर्जा होगा, कुछ पता ही नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं है। और यह भी नहीं पता कि जो मैं वादा कर रहा हूं इसका इंप्लीकेशन कितना होगा, इसका रेमिफिकेशन कितना होगा, फिर कितना बर्डन आ जाएगा, तो कोई कैलकुलेशन नहीं है। गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद आप कोई काम करते हैं तो बाकायदा आपको असेंबली में या पार्लियामेंट में बाकायदा प्रपोजल पेश करना होता है, आपको एक रेजोल्यूशन लाना पड़ता है और फिर बताना भी पड़ता है, भाई देखो मैं ये योजना लाने जा रहा हूं, इस योजना से इतने करोड़ का खर्चा आएगा, हमारे खजाने में इतना पैसा है, इतनी पैसे की व्यवस्था मैं यहां से करूंगा, इतने पैसे की व्यवस्था ये बात आपकी मैं समझ गया, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये सिर्फ कोई एक ही राजनीतिक दल कर रहा है? क्योंकि ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर भी लगता है कि आप भी तो मैनिफेस्टो में वादा करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो या तो आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके ये बात कर रहे हैं। मैं तो जितनी PIL फाइल करता हूं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के करता हूं। NDTV को अगर मुझे वो दल में दिखाई पड़ रहा हूं तो मैं क्या करूं, अदरवाइज तो मैं दल से ऊपर ही उठ के करता हूं। मेरी एक भी PIL, संकेत जी आप मेरी PIL मैं आपको भेज दूंगा, करीब 125 PIL है, पढ़ के बताना जरा कि कौन सी ऐसी PIL है जो किसी पार्टी के कहने पर, नेता के कहने पर हुई है। मैं तो हमेशा सारे काम दल से ऊपर करता हूं और कभी मैं पार्टी को देखता नहीं हूं। मुझे आप एक सवाल मेरा ये अश्विनी जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आप ये बताइए कि रेवेन्यू जनरेशन पर ज्यादा फोकस ना रख के और अगर कल्याणकारी नीतियों को रेवड़ी बोल करके उस पर अंकुश लगाने की अगर बात की जाए, तो आपको लगता है कि वो एक सही दृष्टिकोण रहेगा? मसलन हम लोगों का जो रेवेन्यू बेस है वो टैक्स इवेजन, टैक्स की, कर की चोरी की वजह से
वो कम होता है। और ऐसे में फिर हम अगर जो कल्याणकारी नीतियां हैं उनको हम रेवड़ी बता दें और उसके बाद वो भी देना बंद कर दें, तो क्या ये ठीक है? नहीं, देखिए संकेत जी, आपने जो सवाल किया बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप डिफरेंस समझिए। हाँ, राइट टू फूड फंडामेंटल राइट है, तो अनाज देना आप उसको रेवड़ी नहीं कहेंगे। राइट टू वाटर फंडामेंटल राइट है, तो पानी घर घर पहुंचाना ये आपका ये रेवड़ी नहीं हुआ। राइट टू एयर क्लीन एयर फंडामेंटल राइट है, तो जगह जगह एयर प्यूरिफायर लगा देना ये कोई रेवड़ी नहीं हुआ। तो सड़क बिछा देना, घर घर बिजली पहुंचा देना, ये कहीं से रेवड़ी नहीं हुआ, क्योंकि ये स्वास्थ्य और शिक्षा दे देना, लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट है। मुफ्त, हाँ, मुफ्त एजुकेशन देना, मुफ्त में आपको क्या बोलते हैं हेल्थ, आपको आयुष्मान कार्ड देना, ये सारे आपके रेवड़ी नहीं है। लेकिन मंगलसूत्र देना, सोने की चेन देना, सोने का कंगन देना और आपको क्या बोलते हैं स्कूटी देना, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ नहीं करता। ये तो आदमी अपनी क्षमता के अनुसार खरीदे। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है आपकी, राइट टू हेल्थ, राइट टू एयर, राइट टू वाटर, राइट टू फूड, राइट टू रोड, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जैसे आप फर्ज कीजिए उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए अगर युवतियों को, गर्ल्स को लैपटॉप बांटा गया कि वो उनके शिक्षा में काम आएगा, तो क्या ये राइट टू एजुकेशन का हिस्सा होगा या नहीं होगा, या इसको आप रेवड़ी बताएंगे? देखिए, मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं अश्विनी जी, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही बारीक लाइन है, इट्स अ थिन लाइन। आप परिभाषित कैसे करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन कि रेवड़ी क्या है और कल्याणकारी नीति क्या है? कौन तय करेगा? मैं आपको क्या कह रहा हूं, इसको आप बड़े हिसाब से अपने समझ लीजिए। अगर संकेत के जेब में 200 रुपए है तो संकेत 200 रुपए के हिसाब से अपना घर चलाएं तो अच्छा है। लेकिन संकेत अगर हर महीने 1000 रुपए उधार ले किसी से और उसके बाद घर में बढ़िया म्यूजिक सिस्टम खरीद के लाएं और घर में बढ़िया कार खरीद के लाएं, लोन पे लेके कुछ और ले आए, मैं उसको मानता हूं ये मुफ्तखोरी है, ये रेवड़ी है, या ये गलत है, ये ठीक नहीं है। तो अगर किसी भी गवर्नमेंट के पास XYZ, में स्टेट नाम नहीं लेता हूं, किसी गवर्नमेंट के पास सरप्लस पैसा है, वो पैसा खर्च करे, अच्छी बात है। लेकिन पैसा नहीं है तो उधार लेके बेसिक रिक्वायरमेंट करना, बिजली, पानी, ठीक है, गैस, मैं आपकी बात समझ गया, किताब, कॉपी, आपकी बात तो समझ गया। है। अब मैं यहां पर एक और सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, हमने जितने भी अर्थशास्त्रियों से बात की, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का यह कहना है कि अर्थव्यवस्था का चक्का इसी तरीके से चलता है कि आप पहले कुछ इन्वेस्ट करें, उसके बाद फिर उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए। तो अगर आप एजुकेशन पर खर्चा करेंगे, उसको अगर आप फ्री समझें या रेवड़ी समझें, कुछ भी, लेकिन उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा सोसाइटी से, सरकारी खजाने पर, वो बढ़ेगा और धीरे धीरे पैसा मल्टीप्लाई होता है। ऐसे ही इकोनॉमी चलती है। तो क्या ये तर्क लागू नहीं होता है? देखिए, ये तर्क लोग लंका में खूब दे रहे थे और लंका बर्बाद हो गया। ऐसे ही जो तथाकथित बुद्धिजीवी ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, इन्हीं बुद्धिजीवियों के चक्कर में लंका बर्बाद हो गया। ऐसे बुद्धिजीवियों के चक्कर में पाकिस्तान बर्बाद हो गया। ऐसे बुद्धिजीवियों के चक्कर में अफगानिस्तान बर्बाद हुआ। वहां पे आज क्या है? भूखमरी है। लोग अफगानिस्तान में तो भोजन के लिए किडनी बेच रहे हैं, ये स्थिति आ चुकी है। कोई 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। लंका में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जितनी अपनी चादर हो उतना पैर फैलाइए। चादर आपके पास है नहीं, अब आप कह रहे हैं मैं तो पैर फैलाऊंगा, हाथ भी फैलाऊंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। अरे भैया, आपके पास अगर चारपाई नहीं है तो एक ही चारपाई पे 2 लोग सो लीजिए। आपके पास अगर अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास पैसे हैं, तो आप डबल बेड खरीदिए, उस पर एक आदमी सोइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो बताइए, ये 70 लाख करोड़, आज 70 लाख करोड़ का कर्जा राज्यों के ऊपर, कल ये 75 लाख करोड़ होगा, कल को 80 लाख करोड़ होगा। ये कर्जा कर्जा उतरेगा कहां से? कौन आके देगा? ऊपर से कौन आके देने वाला? तो आपको लगता है इसमें एक होलिस्टिक नीति होनी चाहिए? एक आखिरी सवाल मेरा, ये एक बहुत ही गहन चिंतन का विषय होना चाहिए कि या तो बहुत ज्यादा आप फ्रीबी भी मत बांटिए, अपनी स्थिति देख करके करिए, और दूसरी चीज, थिंक ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग रेवेन्यू, और आप रेवेन्यू जनरेशन पर ध्यान दें। बिल्कुल। और अगर वो नहीं करेंगे तो एक तरफ आप भले ही बंद कर दें, आपके पास फिर भी पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आप पैसा बढ़ा नहीं रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से यही बोला। आपकी क्या राय? इलेक्शन कमीशन ने बहुत की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला, आपकी क्या राय है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। इनफैक्ट मेरे बाद कपिल सिब्बल साहब का मैटर था, वो बैठे हुए थे, अपने मैटर का वेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सिब्बल साहब यू आर पार्लियामेंटेरियन, आपकी क्या राय है? सिब्बल साहब भी खड़े हो गए, उन्होंने बोला हाँ ये मैटर बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो जिससे आप बात करिए सब कहते हैं ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्जा बढ़ रहा है, मुफ्तखोरी बढ़ रही है, मुफ्तखोरी और रेवड़ी के चक्कर में कर्जा और बढ़ता जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट मैटर है। लेकिन मेरा यह मानना है जब तक क्लियर कट गाइडलाइन नहीं बनेगी, पॉलिसी नहीं बनेगी और कठोर कानून नहीं बनेगा, जब तक चुनाव लड़ने पे बैन नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए कानून नहीं बनेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नैतिकता के आधार पर रेवड़ी बांटना बंद नहीं करेगी। बिल्कुल, आप इंक्लूडिंग स्टेट्स में आप क्या करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट फॉर्म कर लीजिए, जो उसके बाद आप करना है। चुनाव के पहले ये तो घूस देना हो गया भैया, ब्राइबरी ये तो ब्राइबरी है, ये तो करप्शन है, ये तो मिसकंडक्ट है। इलेक्शन के पहले आप कह रहे हैं मुझे वोट दे दो, मैं आपको मंगलसूत्र दे रहा हूं, आप मुझे वोट दे दो, मैं आपको स्कूटी दूंगा। ये तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब कहां रह गया? ओके, चलिए अश्विनी उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।